Good morning, all of you. Good morning, sir. Morning, sir. More people are Morning, sir. joining to us within 2-3 minutes. Good morning, sir. Once again, good morning. I, Dr. Pramod Kumar Sethi, welcome to one and all in this webinar. Uh, Effective way of living a healthy life or manage weight needs regular exercise and balanced diet. On this fact, the Department of Physical Education and Sports Sciences of the PGDAV College organized a webinar on health fitness through yoga and nutrition. Today, our first speaker, Dr. Tarak Nath Pramanikar, would speak on yoga for health and fitness. Dr. Tarak Nath, he is working as an assistant professor in Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences, University of Delhi. He is a renowned person in field of physical education and yoga. He has completed his Bachelor of Physical Education, Master of Physical Education, and PhD from very prestigious institute LNIP Gwalior. He also did MA in Yoga from Uttarakhand University, Diploma in Yoga Education from Kevalyadan, Lonavala in Maharashtra. He was invited as a key speaker by Chinese Institute of Sports Sciences. He has published various research papers, books in the field of physical education and yoga. Dr. Tarak Nath, this session is a 1 hour 45 minutes for presentation and 50 minutes for question and queries. I request all of you, please mute your mic. Now I would like to invite Dr. Tarak Nath Pramanikar present their presentation. Dr. Tarak Nath. Thank you, Dr. Pramod Sethi. Okay, it's my. अभी भी नहीं आ रहा है? Anna, you are audible, sir. Presentation is not coming. Just a minute. Hold on. अब आ रहा है? Presentation आ रहा है? दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Visible, sir. Formally, it's my sincere thanks to Dr. R.K. Gupta, Principal of P.G.D.A.V College, Evening, University of Delhi. Again, thanks to Dr. Pramod Kumar Sethi, convener of this seminar, this webinar, Department of Physical Education and Sports Science. Today's topic is health and fitness through yoga. It's a very fine and fantastic topic. Let's understand nowadays, we people are facing a lot of problems and how we have to overcome. Let's try to understand. Concept of health. Health is a common theme in most culture. As all communities have their concept of health as a part of their culture. I've taken a very old definition of that. There's an absence of disease. Now, how we have to control the disease or absence of the disease? Let's understand
State of well-being is a physical, mental, social, and spiritual. When you have controlled this physical, mental, social, spiritual well-being, then you have a positive health, then normal health. Otherwise, you face the illness. Try to understand how physical health is implies perfect functioning of the body. So you need a more energetic, has a good posture, weight normal of age and height, has all body organs functioning normally, has bright eyes, has good texture and shining hair. Again, gets a good sound sleep, has a good appetite and clean breath. Is a positive physical healthy if he or she looks alert and responsible. So you have to understand the physical health and your functioning of your body. Next is mental health. Mental health is not mere absence of mental illness. A mental health person is one who is free from internal conflict, internal tension, internal stress, depression. So you have to control on emotions and sensitive to the needs of others. Confidence in your own abilities. So nowadays we people do not understand our mind. We have to come on in a yoga path. I'll tell you how you have to control your mind. A person is mentally healthy if he or she is relaxed and free from worries. So you have to relax mental through yoga. Again, social well-being. It implies harmony and integration within the individual, between each individual and other members of the society, between individuals and in the world which they live. You have to smile, you have to be very pleasant manner, fulfill your responsibility towards others, help others, get along well with the people around. A person is socially healthy if he or she can move in the society confidently with others. Next is spiritual. Now, spiritual is a person said to be spiritually healthy when he possesses sound mind in a sound body. Sometimes you have to meditate yourself. You have to understand your body and mind. You have to understand the function of your internal organs. You have to understand of your central nervous systems and autonomic nervous systems. हम लोग बहुत बात करते हैं स्पिरिचुअल के लिए, हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं स्पिरिचुअल के लिए, but we are not concentrating on that area. So you have to concentrate and then utter the mantras. When you utter the mantras, you will see your physiological, psychological, your mental health is very good, and you feel the sound body, sound mind. Next is emotions. A person is said to be an emotional healthy when he does not lose temper or does not develop tension and should have self-control. You have to balance yourself. हम लोग आजकल बहुत इरिटेशन हो जा रहा है, गुस्सा आ जा रहा है कि सर अब 1 साल होने जा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे, कोरोना अटैक कर दिया, कोविड-19 हमारे देश में, वर्ल्ड में पूरे छा गए. We have to control, we have to take care of your health, we have to take care of your mind. So release your tension, control your emotions. Then you have to be a very higher positive health. A person who is healthy physically, mentally and socially, spiritually also, is said to be in a state of positive health. That means here I have shown you the 3 highest standards of health. That is a biological, functional and subjective. You have to understand
What are your subjects? What are your motto? What are your planning? Then automatically the body is working. Biological systems is working, functional. Internal organs is working and functional. The chemical secretions occurs inside your body. If you are at stress, your chemical secretions like that. So you have to very much physically, mentally, and socially and emotionally fit. Then you'll see your automatically biological function getting a highest positive health. Now, another topic is the fitness. Supplemental exercise are necessary to assure harmonious development and good habit to develop in a young athlete, for they help develop a strong base on which to build specific abilities. So yoga is an appropriate practice for many athletes, providing physical exercise, breath control, and flexibility. So as well as mental focus, it helps athletes gain knowledge about the mind and body connections, improving body awareness and enhancing mental clarity. That means when we talk of fitness, when we talk of health, we have to understand the tissue, cells, muscles, bone, ligaments, glands, other chemical secretions. Lot of things are occurs, inside your body. You do not know. Even you are listening to me, your body is working. Your central nervous system is working. Your autonomic nervous system is giving a senses to giving a receptors to your brain. That means here is only one. If you understand the yoga, let's understand yoga. Why yoga is really important? Is really cure to health? Is really give you fitness? I say yes. Let's understand. Patanjali already explained in a very few years ago, and that's the 2000 BCE. He explained very nicely in the first line of the sloka that Atha Yoga Anusasana. You need a discipline if you come for yoga. You have to be yourself. You have to introduce yourself. You have to explain yourself. You have to owness yourself. When you practice asanas, pranayama, automatically your harmonium, your immune systems, your hormonal growth is in a positive health. Anushasana. Anushasana means experience, discipline, instruction of your body, instruction of your cells, tissues, ligaments, muscles, bone. So Patanjali explained yoga is not easy. For practice of asanas, pranayama and meditation, you require an instructional discipline. You feel your own experience. When I practice yoga asanas, I'll say that yes, I'm feeling very good, but not others. Those who are practicing asanas, that person is feel perfect, good health, positive health. Second slokas is yogasya chitta vritti nirodha. I spoken that physical, mental, social, emotional. Here is second line. Patanjali explained that you have to control a chitta. Chitta is mind, memory, buddhi, ahankar. हमारे अंदर अहंकार है कि हमको सब कुछ आता है. So here, the Patanjali explained that you have to modify the modification of your mind. You have to control your thoughts. Bring the positive thoughts inside you. That means the slokas itself says
If you are good in physical, positive health, mental health, chitta again is mental health. I feel very bad, oh sir, आज तो boring है, class सुनना पड़ेगा. I'm in car now. But my chitta, my mental focus should be controlled. So yoga says, if you come for a, Patanjali says, if you come for a yoga, you have to be very disciplined. When you are disciplined, then you have to achieve a chitta. You have to control your physical, mental, social, emotional, spiritual. Then you have to start the practice of yoga karmasya kaushalam. Now you have to start. Yoga means, it's not meaning that, yes, sir, 1 घंटा कर ले क्या, 15 मिनट कर ले क्या, 15 minutes कर ले क्या. No. It's a regular practice of your life. Skillness is in action. हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं पार्कों में. इवन हम लोग के पास क्लासेस आते हैं. सर 15 minutes, 20 minutes, give the capsule of diabetic. कैप्सूल ऑफ अस्थमा, कैप्सूल ऑफ कोविड-19, कोरोना हो गया सर, कुछ कैप्सूल दे दीजिए. नो, रेगुलर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. Yes, if you are doing a regular practice of आसन pranayama, meditation, कोविड-19 होना नहीं होगा. जो आसनास है, जो प्राणायाम है, वही आज डॉक्टर करा रहे हैं. मकरासना, उल्टा अभी हम कराएं, आपको आसन दिखाएंगे. That means you need a regular practice of आसन प्राणायाम. योगस्य, so yogasya chittvriti nirodha, then tadadrushtu swarupe vastanam. That means when you regularly practice, you have to achieve yourself. You have to achieve a positive health. Perfection of your head. Perfection of your movement. Understand of your functioning of the body. Getting more oxygen inside your body. The next chapter, Patanjali explain again Ashtanga Yoga. That is a yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. See that he is a scientist. He understands if you start asanas, you have to be ethic. You have to know the ethics of the society. You have to know the rules for the body. Niyam, discipline. Then go for asanas. Then you have to culture your body, culture your cells, culture your tissues. Then pranayam, culture your breathing process. Understand your lungs. Understand how much oxygen you require. Understand when you exhale, how much exhalation is required. Then pratyahara, pratidan ahara, regular diet. You have to know what type of nutrition you require. That Dr. Manjeet Kaur will explain how nutrition is important. Then dharana, dhyan, samadhi. Dharana, dhyan, samadhi is again a dedication, devotions, determination. हम लोग धारणा ध्यान समाधि सोचते हैं कि ये साधु लोगों के लिए है. नहीं, सबके लिए है. You need to determine first what to be achieved, how to be achieved. Then you have to concentrate, dhyana. Samadhi is the devotion. You have to devote to the God, devote to the book, devote to your body. Then you will get the perfect health and fitness. Let's understand how yoga is effect to your bone
your muscles, your ligaments, cells, and tissues. The science of yoga is the scientific basis of modern yoga as exercise in human science such as anatomy, physiology, and psychology. Yoga systematically helps to maintain bone health, bone strength, joint mobility, and joint stability. That means here is again, bone is more important, spinal cord is more important. Most important are bone. And asanas are based on spine. Pranayam is based on spine. Meditation is based on spine. Why spine is more important? Let's understand. Now, gross anatomy. The body and its parts that are visible without the aid of microscopy. Now, these are the organs: brain, lungs, spleen, stomach, veins, pancreas, urinary bladder, intestine, kidney, liver, all human organs are again connected with the spine. Microscopic anatomy, that which can be seen with the assist eye, cells, tissues, organ. Now see how the cells are helping. Specialized cells, tissues, then tissues connected with the organ, then systems, circulatory systems, then organisms. That means these cells are again muscles, tissues, heart, your circulatory systems, then all systems make up part of your human body. So before going to the asanas, or before understanding of health, you have to understand of your body organs. You have to understand the cells, tissues. हम लोग सब कुछ करते हैं बॉडी के साथ, बट बॉडी को समझते नहीं हैं. Now this is the slide. Now see this fantastic slide. Development of anatomy. The study of anatomical changes in a life cycle. The prenatal development and the postnatal development is the after birth. So prenatal development, you see the first four days of the woman's womb. First prepare is spine. Sir, your slide is not working. अब आ रहा है? अब आ रहा है सर. सर थोड़ा सा हमारा हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं तो प्लीज. अच्छा ठीक है. तो शरीर के अंदर सबसे पहले स्पाइन की ग्रोथ होता है. देखिए 4 दिन, 7 दिन, 10 days. Now when the first child occurs, जब वो बच्चा पेट के अंदर होता है, सबसे पहले स्पाइन होता है. 72 hours, then 45 hours. Then you see after the birth, spine occurs. स्पाइन दिखता है सबसे ज्यादा 3 to 9 months. फिर जैसे रीढ़ की हड्डी सख्त होने लगता है तो वो खड़ा होना शुरू हो जाता है. The spine is the most important bone. The total development of an individual is the spine. See, अब आपके स्पाइन के साथ साथ आपके जितने भी ऑर्गन हैं कनेक्टेड है. आपका लंग्स, लीवर, एड्रेनल ग्लैंड्स, लिम्स, बोन मैरो. सो रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है ठीक रखना, और रीढ़ की हड्डी हमारा ठीक रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे. एंड द ब्रेन ऑल्सो. सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑल ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद द स्पाइन. और हम रीढ़ की हड्डी को ही नहीं ठीक रख पाते. हम कभी टेढ़े होके चलते हैं, कभी साइड होके चलते हैं, कभी झुक के चलते हैं. रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट.
So this structures between organisms, and these organisms again among the vertebrate classes. So now I come to the asana. हमारे जितने भी आसन हैं वो बेस्ड ऑन स्पाइन है। तो हम सबसे पहले देखिए ना, स्पाइन क्या है। सबसे पहले 22 दिन में तैयार हो जाता है रीढ़ की हड्डी, 22 दिन में। उसके बाद हार्ट, आंख, ऑर्गन्स और पैर सब डेवलप होता है। तो हम क्यों ना हमारा आसन भी बेस्ड ऑन स्पाइन, इसलिए हमने लिखा है स्थिर सुखम आसनम। जो भी आसन करे वो स्थिर से करे, सुख की अनुभूति ले और धीरे धीरे आसन करे। आसन हम 1 दिन 2 दिन 2 साल 3 साल में फुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आसन लंबे समय तक प्रैक्टिस करना होता है। आसन को करने के लिए लंबा समय देने पड़ते हैं शरीर को। There are 3 types: relaxative asanas, meditative asanas, and cultural asanas. Now spine posture. Just hold on. Just hold on. Again, come. No problem. No problem, sir. Is visible? Yes, sir. Yes, sir. Your slide is visible. Thank you. Now I'm coming to the supine position. Now supine position. Setu Bandh asanas. I'm just giving you simple asanas. Try to understand. You just lie down off your body. धीरे से लेट जाइए। लेट जाने के बाद पैर को मोड़िए। मोड़ने के बाद धीरे से breathe in and raise up. When you breathe in and raise up, you see your upper part of the body, recti abdomens, your abdomen, your spine, lower posture, gluteus maximus, hamstring, quadriceps, your neck, your chin, your shoulder, your elbow, your wrist, all organs are affecting. All organs are concentrating when you are doing a simple Setu Bandhasanas. When you do the Setu Bandhasanas, those who are having a back pain, for them is very good. जिनको पेट बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंपल क्रैम्प हो जाते हैं बहुत फुटबॉलर्स को, बास्केटबॉलर्स को, स्ट्रेच क्वाड्रिसेप मसल्स बहुत स्टिफ है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। So these are the simple asana. If you do regularly, you'll get more effective. And when you do the performance of the asanas, जब आप regularly practice करेंगे, तो you have to inhale up to the toe, and from the toe you have to exhale. See the effective of the asanas. Next is simple Pavan Mukta asana. Again, lie down in a supine line position. Slowly raise your legs up and fold it. जब आप उसको बेंड करेंगे तो अपने आप देखिएगा रीढ़ की हड्डी पे बहुत लोगों का स्पेशली बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बैक स्टिफ है, नेक स्टिफ है, स्पेसिफिकली दोज हु आर हैविंग ए स्कोलिसिस, काइफोसिस प्रॉब्लम्स। सो पवन मुक्तासन पोज ओपन्स अप द नेक, शोल्डर एंड बैक। इट आल्सो एन एक्सीलेंट स्ट्रेच टू हेल्प sciatica, arthritis.
Third is Savasana. Savasana is relaxed your whole body. When I say the body, you have to relax your heart, lungs, liver, pancreas, duodenum, intestine, large intestine. Just inhale. सर ये हम लोग स्लाइड स्लाइड आगे नहीं होगा सर हाँ? आपका स्लाइड आगे नहीं होगा इंटरनेट स्लाइड इज प्रॉब्लम नॉट मूविंग स्लाइड इज स्टिल देयर हाँ यस इज मूविंग इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ यस चल, नो प्रॉब्लम सर यू कैन तो आप अपने ऑर्गन को उसी टाइम कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए जब आप शवासन में हैं. एंड व्हेन यू रिलैक्स योर बॉडी, व्हेन यू just concentrate the spine, slowly inhale up to the coccyx region and exhale from the coccyx region. जब आप श्वास पे ध्यान देंगे, हम लोग क्या है ना, दिन भर काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हम ब्रीथ पे ध्यान ही नहीं देते. हमारा ब्रीथ कहां तक जा रहा है वो भी ध्यान नहीं देते. This is the relaxation posture. When you relax yourself, automatically you will understand your whole body is relaxed and you feel a positive waves. Now this is a Bhujangasana, prone lying position. The movement of upper part of the body, the movement of lower part of the body, Salbhasana and the Makrasana. When we do the Bhujangasana, Salbhasana and Makrasana, see again, the spine is more important factor. Here is again, see the shoulder, elbow, wrist, gluteus maximus, hamstring, triceps trachea, neck, all these muscles, all these bones are working. Again, ribs, recti muscles, spine, navel, these are the organs are stimulating and they need more oxygen. जिस जगह पे रेड कलर दिख रहा है वो जगह क्या शॉर्टन होता है, वहां पे पेन होता है जब आप भुजंगासन करेंगे. तो इस जगह पे आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है. Now next is Salbhasana. See quadricep muscles. Again, abdomen muscles, spine. If you have a strengthening of a spine, then you have to raise the legs. नहीं तो बहुत लोगों का एकदम नीचे तक ही पैर उठता है. You need more strength on the shoulder. You need more strength of neck. Those who are having a spondylitis, asthma, diabetes, lower portion arthritis, इन लोगों के लिए ये आसनास बहुत अच्छे हैं. Now see Makrasana. It's a slow process of your body. You have to inhale and again you have to inhale up to the navel region. From there you have to go to the toe. देखिए इस कोविड-19 में मकरासन बहुत कराया गया है. सर वो दिख नहीं रहा मकरासन, प्लीज दिखाएंगे कि कोविड में अब दिख रहा है? नहीं सर. Now Makrasana again, you'll see you have to lie down on the abdomen region. सर जब दिखेगा, हैं? दिखेगा सर. नहीं इंटरनेट तो यहाँ ठीक है. यहाँ नहीं दिख रहा. भुजंग दिख रहा सर, भुजंग और उससे अगली स्लाइड नहीं दिख रही. अब दिख रहा है? नहीं सर, भुजंग पे ही होंगे. अब नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है सर. हाँ ठीक है सर, अब आ गया सर, आ गया सर. नो मकरासन आ रहा है? आपको वहां आ रहा है मकरासन? सर नहीं आ रहा, भुजंग आ रहा सर. चलिए, सिटिंग आसनास. नाउ वक्रासना. वक्रासन इज अगेन ए ट्विस्टिंग आसनास जिसमें स्लाइटली बैठने के बाद स्पाइन इरेक्ट, धीरे से पैर को मोड़ेंगे और ट्विस्ट करेंगे. स्पाइन ट्विस्टिंग स्पेशली हमारे आज इंडियन प्रोसेस में हम लोग ज्यादातर क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट ही करते हैं. यहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट बहुत कम करते हैं. जब आप ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे, स्पेशली इंडिया में अब फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा आ रहा है. फ्रोजन शोल्डर की डिजीज, नेक प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम, पेल्विक प्रॉब्लम,
female having a lot of disease nowadays, बहुत प्रॉब्लम्स है फीमेल्स को, दे डू नॉट नो. इवन इंडिया में आज के टाइम में 2 कैंसर डिजीज बहुत ज्यादा फीमेल्स को होने लग रहे हैं, ओवरी कैंसर्स एंड अनदर इज ए ब्रेस्ट कैंसर. So you have to twist your body. When you twist your body, you automatically see the kidney, spleen, liver, duodenum. These are the organs that penetrate. And waste products removed from that area. Next is Sasang Asana. Increase body awareness with breathing. It calms the mind and relieves tension around the neck. Activates the thyroid gland. And activates the digestive system. जिन लोगों को स्पेसिफिकली पेट के प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगता है, उनके लिए ससांग आसन बहुत अच्छा है. नेक्स्ट इज अर्ध उष्ट्रासना. बैक आर्च again you see your ribs, your chest, your recti muscles, your abdomen, your hamstring, whole organ, whole muscles, tissues, cells, ligaments. सिर्फ आसन मतलब ये नहीं कि श्वास पे ध्यान, इवन यू हैव टू फील इट. आप जब श्वास ले रहे हैं तो वो सेल्स तक, लिगामेंट्स तक, जहां जहां पेन हो रहा है वहां आपके ऑक्सीजन लेवल कम है, इसलिए दर्द हो रहा है. तो जब आपके उस जगह पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो आपके दर्द कम हो जाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज भद्रासना. हम लोग नीचे बैठना भूल ही गए हैं आजकल. जब हम नीचे नहीं बैठते हैं तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आज के टाइम में. फीमेल हैव देयर फीमेल प्रॉब्लम्स, मेल्स हैव देयर मेल्स प्रॉब्लम. ज्यादातर आदमियों को डायबिटिक, arthritis, lower portions, intestine problems, urine problems. Female have again a menstruation problems, abdomen problems. जब तक आप नीचे नहीं बैठेंगे तब तक आपका कॉक्सिक रीजन, that means भद्रासन gives your oxygen to up to the coccyx region of your body. हम लोग स्पाइन के लास्ट भाग को ध्यान नहीं देते हैं. नेक्स्ट इज वृक्षासना. पेड़ की तरह ना. वृक्षासन में हम लोग ने जब कराते हैं वृक्षासन, यू हैव टू स्टैंड इन वन लेग, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रिम्बलिंग करने लग जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, एक पैर में खड़े नहीं हो पाते. यू हैव टू बैलेंस योर बॉडी. दैट मीन्स आप इस सिचुएशन में यदि खड़े नहीं हो पा रहे तो आप कोई ना कोई थॉट्स आपके माइंड में चल रहा है, आप कहीं ना कहीं से आपका बॉडी रेस्ट में नहीं है. So when you do this vrikshasana, you automatically your lower division of the muscles, tissues, cells are working. Again is the Ardha Chakrasana. Ardha Chakrasana again giving strength to your spine, your shoulder, your elbow, even the leg. बहुत लोग अर्ध चक्रासन करते करते चक्कर आ जाता है. That means hemoglobin कम है बॉडी के अंदर. So these are the simple asanas. If you do regularly, you will get more benefits to your body. Then is Padhasthasana, Trikonasana, and Tadasana. These are the standing asanas. Again, these standing asanas give you more, affect your hamstring, your cup muscles, your again spine, your pectoralis majors, shoulder, elbow, wrist. When you twist, when you do the Trikonasana, latissimus dorsi, gluteus maximus, these are the muscles are working, and these are the area is again affecting for a renovate, for a good health, for a fitness. And last, Tadasana. Tadasana again helps understand your body posture. जब आप ताड़ासन करेंगे तो देखिएगा आपको अपने आप ही लगेगा कि आपका बॉडी का कहीं कर्वेचर गड़बड़ है. So these are the asanas that are affecting to your body, and these are the simple asanas. If you do regularly, you'll get a benefits. Protects your spine, keep your muscles strong,
increase your blood flow, prevents joint problems, improve your postures, your metabolism, increase immunity, makes you flexible, calm your nerve systems, bring harmony to your life. You have to concentrate yourself, helps you to sleep well. So many benefits, improves your heart rate, strengthens your bones, your blood pressure, improves your memory, and helps you to relax. If you do, these are the simple asanas. And asanas give you really relax to your body, your health, and fitness. Now just come to pranayama. सब लोग बोलते हैं कि प्राणायाम क्या एक नाक से छोड़े और एक नाक से ले, यही प्राणायाम है. I'm trying to bring this definition, if you understand. The rhythm of the body, the melody of the mind, and the harmony of the soul create the symphony of life. See, it's fantastic. You have to understand. You have to understand your body, your rhythm. And when you understand of your rhythm of your body, then you have to enjoy. Then you have the harmony of your soul. Then you feel a good life. हम लोग सुकून ढूंढने के लिए इधर उधर भागते हैं. सुकून हमारे पास है, हमारे सामने है, हमारे शरीर में है. तो उस सुकून के लिए यहाँ पे जस्ट समझाने की कोशिश किया कि कैसे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट से आपके बॉडी वर्क करता है. अगेन स्पाइन इज वर्किंग, अगेन योर रिब्स इज वर्किंग, अगेन योर डायफ्राम इज वर्किंग. सो व्हेन यू इनहेल, चेस्ट एक्सपेंड, ribs and diaphragms contract. When you breathe out, chest contract, lungs and diaphragm is relaxed. So simple. I always say that simple pranayama you have to do regularly. That is Anulom Vilom. Inhale with the left slowly and exhale with the right. Inhale with the right and slowly exhale with the left. हम जब ये प्रोसेस करते हैं रेगुलरली, ऑटोमेटिकली माय ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड ऑफ द मसल्स, cells, tissues, ligaments, and when we do from the right, the another side, that's the right side of the part. When you do the left, then right side of the part, and when you do the right, then left side of the part. All body, mind, soul are working with a Anulom Vilom pranayama. This is calming your body. This is cool your body. Give you more energy. And you feel is a rhythm of you enjoy. ये नहीं कि अनुलोम विलोम सर 5 मिनट करें क्या, सर 5 बार कर लें क्या. नो, अनुलोम विलोम प्राणायाम इज अगेन ए लॉन्ग प्रोसेस. यू डू एंड एंजॉय. जितना आप करेंगे यू विल गेट मोर इफेक्टिव. नेक्स्ट इज Chandravedan and Suryavedan is a higher practice. Now, if you do the Anulom Vilom Pranayama, just see how many benefits you are getting. Helps in reversing the heart disease. जितना आप प्राणायाम करेंगे आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा. Increase energy. Provides scene of calm, peace and balance. Increase blood flows and slows the heart rate. Increase power of positivity. You have to reduce your depression, anxiety, anger, confusing. Reduce pain and enhance the body's immune system. Stress reduce. And सबसे बढ़िया चीज क्या है? You have to bring a very good thoughts.
हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे शरीर के हर अंग काम करने लगता है और वो श्वास धीरे धीरे कॉक्सिक रीजन तक पहुंचता है और कॉक्सिक रीजन से ऊपर आने की कोशिश। So that waste product, waste energy, or I say the good energy, you have to bring out from that. Why बहुत जगह में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में लिखा है कि if you do the regularly practice of अनुलोम विलोम प्राणायाम and सूर्य वेदन प्राणायाम, so you have to awakening of your kundalini. देखिए बहुत सब जगह कह रहे हैं, अभी आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है कि प्राणायाम से हमारा बहुत इवन कैंसर क्योर हो रहा है, healing of cancer through pranayama. So that means pranayama is the most important process to cure the disease. You know, nowadays new research comes, I don't know, all our students, muscles memory. That means when you do the asanas and pranayama, automatically your muscles are collapsing, adapting. वो लेता है, वो सीखता है आपका मूवमेंट से, आपका प्रोसेस से. Next is meditation. We all speak of meditation. Meditation is a meaning, just I say the small, made the station. You have to make your station. A mental state achieved by focusing one's awareness on the present moment. While calming, acknowledging and accepting one's feeling, thoughts and bodily sensation. You have to be very calm, quiet. When you feel aggressive, you just utter your own God names. You utter your forefather's name. You have to feel inside your body. You just look inside. You'll see you have to be very calm. हम जितना प्रकृति की तरफ दौड़ेंगे, हमारी पुरुष, हमारी क्षमता, हमारी जो ताकत है वो खत्म होते जाएगा. You have to control your push. You have to control your thoughts. You have to control your bodily actions. Then you will feel positive health and good health. And the last, I say, it is a good sign that yoga has got a place in the heart of millions of people world over. This extraordinary feat has been achieved due to the constant effort of national and international yoga practitioners, with particular reference to the renowned yoga teachers. Sports practitioners of late started believing that yoga assists the athletes both physically as well as spiritually. Hence, the yoga combines asana, pranayama and meditations to tune the mind and body of a person for improvement of health, fitness, and give psychological benefits to the sportsperson. Fear, I have written here psychology. I have already given the physiology. I have written the psychology because when we go for any competition, any type of competition or any written exam, any sports competition, we need a more psychological. बहुत डर लगता है, एग्जाम देने में भी डर लगता है, स्पोर्ट्स खेलने में भी डर लगता है. That fear, that depression, that anxiety brings and improve, and you feel a happiness. So I say that stay home, stay safe. If we are safe, nation safe. Thank you to all to listen me.
Thank you, sir. Thank you very much. Very informative. Tariq sir, you have delivered a very, very good lecture. And I think I remember my old days when I was in sports. So now it's question answer section. We have one question. Anybody have any question or queries regarding this session? Just raise your hand, and I think you write on message box. The session is open for you, all of you. Do you have any questions regarding this session? Student can ask and teacher can ask, because we have teaching fraternities in this session. Non-teaching people are there. If you have any questions. Yes, there is a student of BA program physical education, Kabir. Kabir, you can ask the question. Unmute your mic. Kabir, Hello, sir. Good morning. good morning. Thank you so much for this precious knowledge, sir. I'll always keep that in my mind. It was much necessary at the moment. But, sir, I was about to ask that mental health is important for us, but how to maintain that mental peace? See, for is a simple thing. Whenever you feel the mental problem, or nowadays, we are staying in a house, and सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम लोग जब घर में रहते हैं तो बाहर नहीं जा पा रहे, हम लोग सोशल गैदरिंग नहीं कर पा रहे, तो हम लोग को मेंटल पीस नहीं है. अनुलोम विलोम प्राणायाम इज द बेस्ट ब्रीदिंग प्रोसेस व्हेन यू डू दिस. और हमारे योग में बहुत अच्छा चीज है कि कभी कभी आप हंसो, सो यू हैव टू लिसन द म्यूजिक, यू हैव टू डू प्राणायाम. और जब भी आपको दिक्कत होता है, हम लोग हर वक्त हम सबको कहते हैं कि घर में एटलीस्ट सूर्य नमस्कार रेगुलरली प्रैक्टिस करें, जिससे आपको मेंटल डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो. और यू डू द अनुलोम विलोम प्राणायाम, डू मेडिटेशन, लिसन वेरी सूदिंग म्यूजिक, so that you feel very happy. Sir, I always do, but actually, I am a working person. I have a lot of workload, and so I sometimes ignore my mental health, and I end up being frustrated in all of the things, and I end up being destructive at work and everything. Call to your friends, talk to them, talk with them. So because you have to be first of all you have to take relax to your body. आप रेगुलरली शवासन कीजिए जब आप बहुत काम करते हैं, और जब आप शवासन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वही आपको गुस्सा हो जाते हैं. तो रिलैक्सेशन कीजिए, शवासन कीजिए, और ब्रीदिंग प्रोसेस को ठीक से कीजिए, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाएंगे, आपका रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो आपको चिड़चिड़ापन होने लगेगा. थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस? प्रमोद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. Please switch off your mics, all of you. Okay, sir. On this note, it was very informative session, and thanks to Dr. Tariq for sparing your valuable time. I know you are working in a very prestigious institute. You have your own timetable. So you all enjoy this session, have been able to understand the yoga not only for health, fitness is a way of life. Once again, thank you on the behalf of PGDAV College, Department of Physical Education and Sports Science, and the Sports Committee member. To you, sir. Thank you very much, sir. Thank you to all. Thank you. Thank you, sir. सर कुणाल बोल रहा हूँ. Yes, Kunal. हाँ, एक सरगम रेज हैंड की है सर. Sir, we have one question about she is Sargam. Can we take the question, sir?
चलिए अगली बार नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम आई थिंक. ओके. Okay, sir. Now next session we have very eminent today our second speaker, Mrs. Manjot Kaur. She would speak on nutrition for health and fitness, and she is working as a dietitian and therapeutic counselor in weight and diet management at Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, Government of India. She has worked as a dietitian in various hospitals like AIMS, ESI, New Delhi. She has completed her BSc Home Science, Diploma in Diet and Public Health Nutrition from Delhi University. And she has done her MSc, I think, from IGNOU. Same, this session is 1 hour, 45 minutes for presentation and 15 minutes for question and query session. I request all the students, all the participants, please mute your mic while she presenting her presentation. Now I would like to invite Mrs. Manjot Kaur. Madam, you are on the podium. Good afternoon, Dr. Pramod. Am I audible? Yeah, you are audible, ma'am. Yeah, good afternoon. Good afternoon to all of you. And I thank Dr. Pramod Kumar Sethi for inviting me on this panel and for giving me this opportunity to talk about on nutrition for the sports person. I think you will be able to see my slides. Yes, ma'am. Yeah, just a minute. You can speak on bilingual, ma'am. Yeah, okay, sir. This is regarding sports nutrition. You see, is sports nutrition, it is a well-designed nutrition plan which allows active adults and athletes, जो athletes हैं, जो adults जो अपने sports की तरफ आप जिनका झुकाव है, जो sports को as a profession use कर रहे हैं और वो perform करना चाहते हैं at their best, उनके लिए एक well-designed nutrition plan लेके हम चलते हैं which supplies right food type, क्योंकि हमारे 7 फूड टाइप्स होते हैं हमारे, जैसे सीरियल्स हैं, मिल्क हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, every food group is there. So we have to select the right food type and the right amount of energy and also right amount of nutrients and fluids in the body. And your body should be well hydrated. Hydrated means your body should be like पूरा आपका जो fluid intake है वो आपका maintain रहना चाहिए. So इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम आपका sport nutrition की आपके इसके हिसाब से हम डाइट बनाई जाती है. And basically this sports nutrition is unique to each person and it is on planned on actually जो individual जो goals होते हैं उनके ऊपर plan करके उनके basis के ऊपर हम individual basis बनाया जाता है. Now regarding if we talk about goals of sports and nutrition, जितने भी आपके competitive athletes हैं या adults हैं which have turned to sports nutrition, उनके जो goals है उसको क्या achieve करना चाहता है. Number 1, it is to perform well. Whatever you have chosen sport, whatever your activity you are in, आपको उसके activity में आपकी performance best होनी चाहिए. ये आपका number 1 goal है. Number 2 goal is to reduce the risk of injury or illness, क्योंकि इन तरह की activities में कई बार injuries हो जाती है, illness हो जाती है, तो उस चीज को reduce करना है, उस risk को reduce करना है. That is the another goal of sports this nutrition. And the third one is, of course, very important to ensure the best recovery after exercise. क्योंकि जब आप exercise करते हैं, जब आप sports में activity में आप indulge करते हैं, तो उसके बाद जो आपकी क्योंकि इतना जबरदस्त muscular strain होता है, उससे आपकी recovery best होनी चाहिए. So these are the 3 goals of sports and nutrition. First of one is performance, another one is that to reduce the risk, and third one is the best recovery after the exercises. अब क्या होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इट इंक्रीजेस योर एनर्जी एक्सपेंडिचर, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, आप अपनी कैलोरीज यूज करते हो, तो दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस. किस लिए?
टू फ्यूल द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इन द बॉडी, क्योंकि आपके जो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स है वो एक्सरसाइजेस के वक्त आप उसको यूज करते हैं तो उसको फ्यूल की जरूरत पड़ती है। एंड ऑल्सो आपका उस टाइम ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है एंड हार्ट रेट भी बढ़ जाता है एंड बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। तो इन 3 चीजों को फ्यूल करने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत है और वो एनर्जी आ रही है आपकी कार्बोहाइड्रेट से, राइट? Sorry, ma'am, slide is not working. आपकी स्लाइड एक ही जगह स्टेबल है, रुकी हुई है। जस्ट अ मिनट सर। Yes, it's okay, ma'am. Okay, sir. Okay, when I'm talking about carbohydrates, तो carbohydrates पे आने से पहले let me tell you कि ये चीजें carbohydrates ये सब चीजें क्या है। I think आप सब लोगों को पता होगा, this is one of the nutrients. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये हमारे फूड के अंदर होते हैं, विच आर टू बी गिवन टू द बॉडी इन रिक्वायर्ड अमाउंट, राइट? तो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। आई डिवाइडेड इनटू टू classified to two groups. One is the macronutrient, you can see in the slide, and another one is the micronutrient. See, micronutrients जो है, macro नाम से ही पता चल रहा है कि ये nutrients जो हैं, they are required in large amount for the proper functioning of the body. अब ये जो macronutrients हैं, ये हैं carbohydrates, proteins and fats. These are the 3 macronutrients. Another group is the micronutrient, जिनकी requirement हमारी body में बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, and they are vitamins and minerals. Okay, now talking about the carbohydrate, जो मैं अभी बात कर रही थी कि आपको कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लाइक फ्यूल की जरूरत है आपके मसल्स के लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने के लिए, जो बढ़ गया है उसको मेंटेन करने के लिए, हार्ट रेट के लिए। सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स, इनका जो मेन फंक्शन है इज टू गिव एनर्जी। यू नो, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट गिव्स 4 किलो कैलोरीज। एनर्जी वी ऑलवेज मेजर इन किलो कैलोरीज। जो भी हम डाइट चार्ट बनाते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, आपकी कैलोरीज के हिसाब से हम डाइट चार्ट बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज देता है। तो अगर आप लेस कार्बोहाइड्रेट लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जनरली स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं, प्रोटीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कम ध्यान देते हैं। तो यू सी, इफ यू टेक लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस एंड योर रिकवरी विल बी इम्पेयर्ड। और इसके साथ साथ जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा उसको फुलफिल करते हैं, उसके ऊपर भी उसकी एक्टिविटीज के ऊपर भी हम हैम्पर कर सकते हैं इफ वी टेक लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Now, what are basic functions of the carbohydrate? Like I told you, energy production, right? The main role of carbohydrate in physical activity, जो भी आप physical activity करते हैं, उस physical activity में main role of carbohydrate is to provide energy. अब जो athletes हैं, उनकी diet में अगर enough carbohydrate नहीं होगा, definitely it will affect their performance and recovery will be impaired. क्यों? क्योंकि carbohydrate is the key fuel. वही एनर्जी आपको देता है, वही आपके स्टोर्स आपके फुलफिल करता है। अब नेक्स्ट इज द एनर्जी स्टोरेज। बॉडी कैन स्टोर दिस कार्बोहाइड्रेट्स इन मसल्स एंड लिवर एज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, एंड वी यूज दीज स्टोर्स एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल इन फिजिकल एक्टिविटीज, राइट? अब ये ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो दे आर लिमिटेड, आप उसको बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, दे आर लिमिटेड स्टोरेज। सो फॉर दोज जो ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल में करते हैं, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फुली फ्यूल्ड। आपके जो है ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, आपके एक्सरसाइज से पहले भी आपके फुली फ्यूल्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज से पहले आपके ग्लाइकोजन स्टोर पूरी तरह फुलफिल नहीं है तो आपकी एक्सरसाइज वो हैम्पर कर सकते हैं, आपको लेथार्जीनेस, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड ग्लाइकोजन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी at the start of the exercises or any other form of physical exercises. So exercise करने से पहले आप अपने stores को fulfill रखिएगा, ठीक है? Then if you are doing high intensity training for long periods and your glycogen stores are not sufficient, definitely you get tired very very easily and you cannot perform at your best. So in that case, regular intake of carbohydrate rich foods are very very important. और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन से हैं? ये सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट इज द, जस्ट अ मिनट,
ओके, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में मैं इसको थोड़ा सा और इसको इजी करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स के जो एक तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। यू नो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर होल ग्रेन सीरियल्स, ट्यूबर्स, लेग्यूम्स, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। अब यू सी, ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, दे शुड बी टेकन विथ स्किन एंड सीड्स। अगर आप स्किन और सीड्स के साथ उसको नहीं ले रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग एनफ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स बी कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल देयर इन स्किन्स, so they are very good examples of this complex carbohydrate। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लाइक शुगर हो गया, कैंडीज हो गए, चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स, हनीज, दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट। जो बेसिक डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट्स का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which have to be digested first to get absorbed in the body, और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सीधा आपकी बॉडी में जाके एसिमिलेट हो जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। So it's better to take complex carbohydrates. Okay. Now, what is the recommended intake of carbohydrate? It depends on your activity. आपकी intensity कितनी activity की? Like I'm showing this in slide. If you are taking light activity, like very low intensity है आपका, तो you should have actually 3 to 5 grams of carbohydrate per kg body weight. 3 to 5 grams मतलब जैसे सपोज आप 60 kg के हो, लेट्स से आप 60 kg के हो, तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट होगा, देन इट विल बी 180 to 6 5 30, yes, 180 to 300 grams of carbohydrate per day। आप अपने बॉडी वेट को 3 to 5 grams के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, that has to be taken in whole day। the carbohydrate का intake है। and if you are taking moderate exercises like 1 hour, say you're taking 1 hour per day, then you should take 5 to 7 grams of carbohydrate per day। and in case if you are taking 1 to 3 hours of exercises per day, then you have to take 6 to 10 grams of carbohydrate per in a day। and if you are in a very very high extreme commitment जो आप कर रहे हैं, like more than 4 to 5 hours per day, then you have to take 8 to 12 grams of carbohydrate per day। okay, now what happen if you take low intake of carbohydrate? जो generally देखा जाता है कि sports person जो है, ये लोग कम carbohydrate लेते हैं और प्रोटीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। just it's not, yeah, if you are taking low intake of carbohydrate, definitely, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी देना, तो अगर कार्बोहाइड्रेट ही आप कम लेंगे, then there will be low energy level, there will be loss of concentration, dizziness will be there, irritability is there, and definitely your performance gets affected। so please आप कार्बोहाइड्रेट जो है ना, एक्चुअली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, they have their own function, and please कोई भी न्यूट्रिएंट किसी भी अदर न्यूट्रिएंट का काम नहीं कर सकता है। so you have to take proper amount of nutrient in your diet। now next nutrient which I will take, which you are actually very very fond of this in sports person, this is protein। protein is basically is the building block। आपके जो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस very very important function of protein is very very essential for the cell and tissue growth। and this adequate intake of protein is very very important during different periods of growth। like आपका जो adolescent growth है, उसमें आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। then in case of pregnancy also, then lactation phase में जब लेडी ब्रेस्ट फीड कर रही होती है उस बच्चे को, तब प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा, रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एंड डेफिनेटली इन स्पोर्ट्स पर्सन, एडिक्वेट अमाउंट इज आल्सो इंक्रीज डिमांड इन स्पोर्ट्स पर्सन। सो प्रोटीन की जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट। बट व्हाट हैपन इन स्पोर्ट्स पर्सन, हम इसकी रिक्वायरमेंट जो है 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, उसको डबल अमाउंट कर देते हैं। बट व्हाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन स्पोर्ट्स पर्सन? इट इज what happen, it is actually जो आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज है, जो हमने स्टोर्स बनाए होते हैं जहां से आपको एनर्जी मिल रही है, उन ग्लाइकोजन स्टोर्स को ये बूस्ट करता है। एंड डेफिनेटली विद इन एक्सरसाइजेस मसल सोरनेस होती है, मसल की टियर एंड वेयर एंड टियर होता है, उन मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, मसल्स की सोरनेस को रिड्यूस करने में प्रोटीन ही हेल्प करता है।
So protein intakes can actually increase your energy intake, which can, अगर आप प्रोटीन ही ज्यादा लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो व्हाट विल हैपन, आपका जो प्रोटीन इंटेक है दैट विल इंक्रीज योर कैलोरी इंटेक, व्हिच कैन एक्चुअली लीड्स टू वेट गेन. एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि आप हाई प्रोटीन लेंगे तो इट विल इंक्रीज योर मसल मास, और क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे और कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो व्हाट विल हैपन, प्रोटीन जो है it will start giving energy. जो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है एनर्जी देना, प्रोटीन will start giving energy, और प्रोटीन का मेन फंक्शन है आपके मसल मास के लिए, तो वो चीज आपका अफेक्टेड हो जाएगा. So it for the energy purpose you have to take carbohydrate in your diet, and also for the muscle mass and for the wear and tear of muscles you have to take proper amount of protein in the diet. बट इन केस अगर आपने प्रोटीन को बढ़ा के करना है, सी प्रोटीन को बढ़ाना है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इसका बिना सोचे समझे इसको बढ़ाना है. यू हैव टू टेक अ गुड क्वालिटी प्रोटीन. सी गुड क्वालिटी प्रोटीन का मतलब ये होता है कि देखिए प्रोटीन, जो भी प्रोटीन के सोर्सेज है, लाइक वेजिटेबल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन आपको मिलता है दालों से, आपको मिलता है सोयाबीन से, देन यू हैव नट्स एंड ऑयल सीड्स, सो दे हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एंड व्हाट विल हैपन, जो आपका सीरियल प्रोटीन है, जैसे अनाज का प्रोटीन है, उसमें आपका एक अमीनो एसिड इज मिसिंग, राइट. अब प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अमीनो एसिड्स होते हैं. अब दाल का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक अमीनो एसिड इज मिसिंग. सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर सीरियल्स में ए नाम का मिसिंग है और पल्सेस में बी नाम का मिसिंग है, तो अगर मैं अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोच के कि मेरे को प्रोटीन बढ़ानी है, तो आई स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ दाल. एक कटोरी की जगह मैं 4 कटोरी खा रही हूँ टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो मेरा प्रोटीन नहीं बढ़ेगा. व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज मिसिंग इन दाल. So what will happen, अगर मैं 1 कटोरी खाऊं या 4 कटोरी खाऊं, that amino acid is not there in that pulse group. So what I should do, I should combine the pulse and cereal group in combination. Like I can make missi roti. You know what missi roti is? What is besan, चने की दाल and गेहूं का आटा. तो cereal group एंड पल्सेस ग्रुप, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया. व्हाट विल हैपन, जो पल्सेस में आपका अमीनो एसिड है और जो सीरियल्स का अमीनो एसिड है वो पल्सेस में नहीं है, जो पल्सेस का है वो सीरियल में नहीं है. व्हेन यू कंबाइन द बोथ थिंग, both amino acids will be there in your diet. तो कहने का मतलब ये है, when you combine the two groups, आप जैसे पोहा बनाते हैं, पोहा के अंदर this is cereal group, आप उसके अंदर नट्स डाल दीजिए, पीनट्स डाल देंगे, तो what will happen, आपके नट्स के अंदर जो अमीनो एसिड मिसिंग था, you will get it from the cereal group, and आपको पोहा में मिसिंग था वो आपको नट से मिल रहा है. तो when you combine the two food groups, again you are getting more of this thing now, all the amino acids. So when you combine the two groups, you are actually improving the quality of protein in your diet. So कहने और बाकी जो बात करें अगर एनिमल प्रोटीन की, एनिमल प्रोटीन इज डेफिनेटली अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन. तो एनिमल प्रोटीन में हम हमारा जो एक अगर हम योग के हिसाब से बात करें तो सात्विक डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सात्विक डाइट में हम मिल्क की बात करते हैं कि बाकी हम अगर आप मीट लेते हैं, फिश लेते हैं, चिकन लेते हैं, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हम इसको तामसिक डाइट में माना जाता है कि ये इस कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, समथिंग लाइक दैट इन योग, कि जो भी आप खाते हैं दैट न्यूट्रिशनल स्टेटस इट शोज ऑन योर फेस. तो अगर आप एनिमल खाएंगे या मांस मच्छी खाएंगे तो डेफिनेटली इट विल शो ऑन योर फेस, एंड उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस और भी अदर कई प्रॉब्लम्स आने देखने को मिलती हैं. तो एनिमल फूड में अगर हम मिल्क की बात करें, मिल्क इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन. तो मिल्क आपका पूरी एमिनो एसिड के साथ आपको सारा मिलेगा, एंड इट्स अ, तो आपके हर मील में अगर आप मिल्क को रखें, मिल्क के प्रोडक्ट्स रखें, जैसे आप मॉर्निंग में दूध लेते हैं, आफ्टरनून में यू कैन टेक कर्ड, देन इवनिंग टाइम में यू कैन हैव पनीर, रात को सोने से पहले दूध लीजिए. तो जो आपका हमने आपका रिकमेंडेड इनटेक रखा है 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट. जैसे सपोज अगर आप 60 केजी के हो तो आपने कितना लेना है, 180 ग्राम्स, 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको लेना है, क्योंकि जितना वेट के हिसाब से यू हैव टू टेक 2 ग्राम. तो आप एनिमल प्रोटीन की में आप मिल्क इंटेक के साथ में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ जो 2 फूड ग्रुप्स हैं उसको यूज करके आप हर मील में प्रोटीन को रखिए. इससे आपकी प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो आपके डाइट में इंप्रूव हो जाएगी.
Then next is the fat. फैट जैसे अभी मैंने आपसे पहले बात करी कि कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, एंड सिमिलरली फैट इज आल्सो द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ यू नो फैट इज बेसिकली अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी. जो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा था, दैट इज 1 ग्राम of carbohydrate gives 4 kilocalories. Now in this fat, this is actually more than double. 1 gram of fat gives 9 kilocalories. और फैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट कैरीज फैट सॉल्युबल विटामिन. हमारे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के. ये 4 विटामिन ऐसे हैं जिनको फैट, दिस न्यूट्रिएंट इट कैरीज दीज विटामिन्स, एंड उनकी एब्जॉर्प्शन में भी ये फैट हेल्प करता है. और हमारे बॉडी के अंदर खूब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं. एक्चुअली उसको, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस को, उनकी ग्रोथ की, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिएक्शंस के लिए फैट उनको, उनके रिएक्शंस को फास्ट करता है, उनको हेल्प करता है. एंड लेकिन अगर इसके साथ ही अगर आप एक्सेस फैट लेंगे, देन व्हाट विल हैपन? कंज्यूमिंग टू मच फैट, इट लीड्स टू वेट. अगर आप एक्सेस ऑफ फैट लेंगे, डेफिनेटली लीड्स टू एक्सेस ऑफ कैलोरी इनटेक, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि दिस 1 ग्राम ऑफ फैट इट गिव्स 9 किलो कैलोरीज, मींस मोर देन डबल द अमाउंट. तो अगर आप फैट ज्यादा लेंगे तो कैलोरी इनटेक आपका बढ़ जाएगा, व्हिच लीड्स टू वेट गेन एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स इन हैम्परिंग इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट. जितना वेट ज्यादा होगा आपकी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली अफेक्ट करेगा. देन व्हाट इज द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ फैट? Whatever fat you are taking, आपका ये ध्यान रखना है, you should not take saturated fat. Saturated fat जो होते हैं लाइक देसी घी वगैरह होते हैं, इनको अवॉइड करना है. Try to take unsaturated fat या polyunsaturated fatty acids. Saturated fat को रिप्लेस करना है विद unsaturated fatty acid. इसके साथ आपने टाइप ऑफ फैट को, अगर हम इन कॉम्बिनेशन विद रिडक्शन ऑफ फैट, यू नो, आपने फैट को कम करना पूरे दिन में कम से कम 2 to 3 टीस्पून लाइक विजिबल फैट. देखो आपके हर चीज में कुछ ना कुछ फैट तो है ही है. जैसे मिल्क में भी फैट है, दालों में भी फैट है, तो वो थोड़ा बहुत फैट जो आपको नजर नहीं आ रहा है कितना फैट है, बट विजिबली फैट आप जो आप अपनी तरफ से सब्जी में डाल रहे हैं या दाल में डाल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इट शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 grams, like 2 to 3 teaspoons or maximum 4 teaspoons. It should not increase more than that. So type of fat should be unsaturated fat with the reduction of fat. Definitely it will be very, very helpful and protective against cardiovascular events. Now another very, very important is the water nutrient. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करी थी जब मैंने कि बहुत रिक्वायरमेंट इनकी बॉडी में जाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. दिस वाटर is very, very important. It is very, very essential for life. Did you know that water is actually, इसको न्यूट्रिएंट नहीं माना जाता, फिर भी it is very, very important. And जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, they have to drink water in order to survive. And it is actually involved in every body function. हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वाटर की इतनी ज्यादा है कि it carries all nutrients, it carries all oxygen to all cells in a body. मेन कंपोनेंट है जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, वाटर इज द एक्चुअली मेन कंपोनेंट, एंड बॉडी नीड्स मोर वाटर देन एनी अदर न्यूट्रिएंट. और हम, क्योंकि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं उसमें थ्रू रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो थ्रू यूरिनेशन एंड ऑल्सो थ्रू रेस्पिरेशन हम पानी हमारी बॉडी में से बाहर निकलता रहता है. सो दिस वाटर मस्ट बी रीप्लेस टू मेंटेन मैक्सिमम हाइड्रेशन. जनरली देखा जाता है कि सर्दियों में भी लोग कम पानी पीते हैं. पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास या मैक्सिमम 15 ग्लास तक भी आपको पानी पूरा पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट हो सके. And also water it regulates your body temperature, and जितना बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, water is very, very essential for the this body metabolism. Then in cases of sports person, what is the importance of water in sports person? सबसे पहले अभी जैसे मैंने आपको बात करी थी कि हाइड्रेट करती है बॉडी को, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए, इट कैन कॉज टायर्डनेस, इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, इट रिड्यूसेस एरोबिक दिस कैपेसिटी आल्सो. नाउ
some very important points which you have to follow. Number 1 is look beyond weight when determining your health. अभी सर ने पीछे अभी सर बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा डिस्कशन करी है। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको बार बार वेट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली कई बार केसेस में देखा जाता है कि लोग बार बार वेट मशीन में चेक करते हैं कि वेट कितना है। इट इज नॉट योर वेट विच मैटर, इट्स व्हाट जो आपका वेट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू शुड फॉलो सम स्ट्रेटेजी। आपको एक्सरसाइज अच्छी करनी है, आपको जो आपका डाइट है वो आपको ठीक से खाना है, which actually increases muscle and lowers the fat. So weight on the scale हो सकता है कि आपका जो इंचेस लॉ, आपका जो इंचेस है आपके उसके हिसाब से आप चलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो स्केल के ऊपर वेट है इट माइट बी सेम, बट डेफिनेटली यू विल लुक बेटर, यू विल परफॉर्म बेटर, यू विल बी हेल्थियर। तो नॉर्मल वेट आपका कितना होना चाहिए आईसीएमआर के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से जितना वेट है आप उसको मेंटेन करिए एंड डोंट गो बियॉन्ड दैट। Then number 2 is the protein. Like I told you before also, प्रोटीन का ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा तो लेनी है, बट सिर्फ ज्यादा ही नहीं लेनी है, कब लेनी है और कितनी लेनी है और किस तरह की लेनी है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर आप एथलीट है आपको प्रोटीन लेनी है डेफिनेटली, बट इट शुड बी कंज्यूम्ड इन द राइट अमाउंट एंड ऑल्सो एट द राइट टाइम। और रैंडमली आप कभी भी प्रोटीन ले लें और आपको बॉडी को उस वक्त जरूरत नहीं है, दैट विल नॉट हेल्प यू अ लॉट। सो बिल्डिंग मसल एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस टू मसल्स, it requires to consume more and good quality protein. I told you good quality protein कौन सी है, and और उनको भी right amount में लेना है, but at the right time to encourage जो muscle protein synthesis है उसी को help करने के लिए आपको right amount of protein right amount of time में लेना है। Then एक infrequent meals cause problem. Yes, कई बार क्या होता है कि मील स्किप कर देते हैं लोग। मील स्किपिंग इज डेफिनेटली अ वेरी बैड आइडिया। और इस तरह का कोई ईटिंग पैटर्न है कि वो भी आपको जैसे प्रॉपर आपका जो प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, दैट शुड बी लाइक अर्ली मॉर्निंग अगर आपने पानी पिया, ल्यूकवार्म वाटर ले लिया, उसके बाद यू हैव टू हैव योर किंग साइज ब्रेकफास्ट। यू नो आपकी बॉडी पूरी रात से लेके सुबह तक आपका खाली पेट है, then you have to have fuel in your body. You take proper breakfast, and breakfast proper means you have to have cereals with milk. Cereals और अनाज और दूध का जो कॉम्बिनेशन है that should be your breakfast. कई लोग फ्रूट्स वगैरह भी ब्रेकफास्ट में ले लेते हैं, कई लोग नट्स वगैरह भी लेते हैं, so this is not actually healthy breakfast. मिल्क और सीरियल का कॉम्बिनेशन लाइक दलिया हो गया, देन यू कैन हैव इवन पराठा, ऊपर ज्यादा घी नहीं लगाना, पराठा के अंदर आप वेजिटेबल स्टफिंग कर सकते हैं, यू कैन टेक विद कर्ड। अगेन कर्ड इज द मिल्क प्रोडक्ट एंड पराठा इज द अनाज सीरियल प्रोडक्ट। You can take the combination of this. This should be your breakfast, and then in between breakfast and lunch you have to take something like mid morning में you can have fruits or you can have sprouts, you can have poha, whatever you feel like। सब meal में आप उसको आप mid morning में ले सकते हैं। Then regarding lunch and dinner time, lunch and dinner time में you have to take all your food groups। जैसे मैंने सबसे पहले आपसे बात करी थी कि फूड टाइप का ध्यान रखना है। कोई भी ग्रुप किसी को वो सेटिस्फाई नहीं करता है कि अगर आप एक ग्रुप को, ये बहुत फैट डाइट्स आ रही है कि आप एक ही प्रोटीन डाइट लेते रहे या फिर एक ही वेजिटेबल खीरा खाते जा रहे, टमाटर खाते जा रहे। इट्स नॉट दैट। यू शुड हैव ऑल द टाइप्स ऑफ फूड, ऑल द ग्रुप्स ऑफ फूड इन योर लंच एंड ऑल्सो इन योर डिनर। लाइक फूड ग्रुप्स जितने हैं 7 फूड ग्रुप्स है, 7 के 7 आपके लंच में होने चाहिए, 7 के 7 आपके डिनर में होने चाहिए। लाइक सीरियल्स है, दूध है, देन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, pulses है, then fat है, sugar है, all food groups should be there in the lunch. For example, आप साथ में चपातीस लेते हैं या अगर if you are taking packed lunch, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप इतने सारे ग्रुप्स को कैसे कंपनसेट करेंगे। You can combine the things, you know, आप अनाज के नाम पे रोटी लेके चले गए और सब्जी आप साथ में लेके चले गए और दही के अंदर आपने सपोज स्प्राउट्स डाल दिए, स्प्राउट रायता बन गया, नहीं तो दही के अंदर खीरा रायता बना के यू कैन टेक द दाल। तो आपने इसको कॉम्बिनेशन में यू हैव टेकन
4 things, 4 ग्रुप्स ले लिए और साथ में आप फ्रूट्स लेके चले, सो यू हैव इंक्लूडेड ऑल द फूड ग्रुप्स। इसी तरह से डिनर भी हो सकता है, बट डिनर जनरली हम लोग घर पे करते हैं, तो घर में आप सारे फूड ग्रुप को सामने आप अलग से भी ले सकते हैं। यू कैन हैव चपाती, यू कैन हैव दाल, यू कैन हैव सब्जी, यू कैन हैव सैलेड्स। देन शाम को लंच और डिनर के बीच में यू कैन हैव फ्रूट्स और यू कैन हैव सूप, व्हाटएवर यू फील लाइक। नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले यू हैव टू टेक अगेन अ ल्यूकवार्म one glass of milk. So इस तरह की डाइट अगर रखेंगे, कोई भी स्किपिंग मील की नहीं होगी डेफिनेटली। इस तरह का पैटर्न रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली बिल्ड योर मसल्स एंड राइट अमाउंट ऑफ टाइम में आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी एक्सरसाइजेस आई मीन इस तरह की डाइट लेने से डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Then next is the eating healthy foods keeps you healthy, right? Okay. कई बार क्या होता है, ये लोग एथलीट्स की भी बात करें या नॉर्मल पीपल की भी बात करें कि ये लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। they try to take more of proteins. So inadequate intake of fresh fruits and vegetables, it definitely results in reduced athletic performance. So you have to consume plenty of fresh fruits and vegetable to sustain इस bacterial colonies, जो हमारे gut के अंदर bacterial colonies है, good bacteria है, उसको वो sustain करते हैं on fresh fruits and vegetable. So there will be additional benefit if you take fruits and vegetables along with the carb, क्योंकि उसके अंदर भी आपको carbohydrates मिलेगा, तो आपकी better, definitely your performance will be better. The another one is the variety of food. So actually there is no perfect food कि आप एक ही फूड को कह दें कि हाँ this is the perfect food, मैं यही बार बार खाता रहूंगा, मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। Definitely it's this is a myth. There is no perfect food, and if you keep eating the same food again and again and again and again, you believe that it is good for you, आपको उसकी वजह से न्यूट्रिशनल रिस्क या डेफिशिएंसीज क्रॉप अप हो सकती हैं। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, दैट इज एक्चुअली it should be well distributed throughout the day. Another one is the poor hydration, that is poor performance. अब पानी, जैसे मैंने आपको बोला खूब पानी पीना है, लेकिन पानी का ये ध्यान रखना है सुबह से पीना है। ये नहीं कि आपने एक ही टाइम में ज्यादा पानी पी लेना। अगर आप अभी भी 2-3 ग्लास पी रहे हैं पूरे दिन में या 4 ग्लास पी रहे हैं, यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। स्टार्ट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। आपने सुबह 1-2 ग्लास पी लिया, देन आप नाश्ते तक आते आते आपके 4 ग्लास हो गए, देन लंच तक आते आते आपके 8 ग्लास हो गए, देन नीचे डिनर तक आते आते आपके 12 से 15 ग्लास हो जाएंगे। बट आपको ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि खाने के साथ, ब्रेकफास्ट के, लंच के साथ या डिनर के साथ आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद भी पीजिएगा। खाने के साथ पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि जब भी आप पानी खाने के साथ लेते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, एंड दैट विल डिले योर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. So to sustain the best possible fluid balance, it is very very important. और क्योंकि आपका जो हीट स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना है, आपका जो स्वेट रेट, क्योंकि एक्सरसाइजेस के वक्त स्वेट भी बहुत होता है, उसको सस्टेन करना है, और जो बॉडी के अंदर डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है टू ऑल सेल्स, उसको, क्योंकि वाटर ही हेल्प करता है उसको न्यूट्रिएंट्स को ले जाना का, ऑक्सीजन को ले जाने का, और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी से बाहर आ रहे हैं, वाटर only helps in that. So definitely जब तक आपका फ्लूइड मेंटेन अपनी बॉडी में रखेंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. Then recovery from the exercise is just as important as the exercise. Yes, आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई भी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है, you are putting more of stress on muscles. एंड उसमें क्या होता है कि उन मसल्स को फिर एक्सरसाइज के, उस एक्टिविटीज के बाद उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए, सो दैट दे शुड रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेस, एंड जो आपने एक्सरसाइज की उससे आपको बेनिफिट भी मिल जाए. सो खाने के साथ साथ डेफिनेटली आपने एक और चीज का भी बहुत ध्यान रखना है टू गेट दिस थिंग, एडिक्वेट स्लीप. इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in helping to sustain appropriate eating behaviors and muscle recovery. जो भी आपने अपना पैटर्न ईटिंग का बनाया हुआ है उसके साथ में आपका कम से कम 5-6 घंटे की स्लीप, साउंड स्लीप जरूर होनी चाहिए. Then last is you should learn how to lower the stress. क्योंकि मैम एक्सक्यूज मी मैम, आपकी स्लाइड नहीं दिख रही.
Slide. Slide. It's not. visible. It's not showing. Not showing. Not visible. I think this is the last slide. I think things to follow slide hai. Just a minute. Is this showing now? No, ma'am. No. There is something technical error. Just a minute. I'm trying. Anyway, this is the last point. If You can continue, ma'am. No problem. You can continue. this is the last point to how to lower the stress. Stress levels actually they impact eating behavior. क्योंकि जब जितना ज़्यादा हमको stress होता है, this high stress level, it leads to actually the consumption of high energy dense food, which are definitely high in fat, high in sugar. तो इस तरह की अगर डाइट पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए हमारी ड्यू टू स्ट्रेस, तो उसमें क्या होगा, हमारा वेट गेन हो जाएगा, एंड दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी बैड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. So you should find a strategy for stress reduction which can help you to sustain optimal nutrition, and definitely it will help you to influence both performance and health. So definitely with yoga and good amount of diet, good diet, definitely it influence performance and your health. I think इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी. इसके बाद अगर if you have any questions, you people can ask me. Now session is open for the question and query regarding the balanced diet, sports nutrition, general health diet. Anyone have any query in question? Please raise your hand. Because any query regarding the sports diet, specific sports diet for judo, wrestling, and other activities. So, okay, ma'am, I have one question to you, ma'am, because I think I start the questions. What are the difference between keto and intermittent diet? Now these days, these words is. There is a question from Sargam. Let's take the Sargam. Sargam, what is your question? Sargam, you can ask the question. Yes, sir. Yes, you ask. Sir, my question is that what is proper diet we can take to gain weight, proper weight? Ma'am, there is a question from Sargam, and she asks how to gain the weight through proper diet. See, ऐसा आपका वेट कितना है, पहले तो ये देखना है कि आपका WHO के हिसाब से आपका वेट कितना है. इट्स नॉट दैट कि आपको वेट इंक्रीज करना है या आपको वेट डिक्रीज करना है. पहली बात तो ये है कि आपकी वेट WHO के हिसाब से या आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वेट कितना है. अगर वो कम है, देन यू हैव टू इंक्रीज द वेट. देन क्वेश्चन कम्स, अगर आपका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, आइदर यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट और मे बी सम अदर प्रॉब्लम. अगर आपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो देन यू हैव टू शो इट टू मी. और अगर नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू हैव टू इंक्लूड ऑल योर फूड ग्रुप्स एंड यू शुड बी हैप्पी. क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप उसमें रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपकी डाइट का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. टेक प्रॉपर डाइट, डोंट स्किप एनी मील एंड इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स एंड बी हैप्पी. एंड अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए. यू कैन कम टू MDNAY Morarji Desai Institute and I'm working there as a dietitian. I can individualized आपके लिए डाइट प्लान में बना सकती हूँ. This is nice. Nice. Thank you, ma'am. You're welcome.
One question from our Dr. Shruti. She is a lecturer in our college. Actually, Doctor, yes, ma'am, you can ask. Uh, Hello, ma'am. First of all, I want to congratulate Sethi sir for organizing such a wonderful session. And मैं थोड़ा late join कर पाई because of some personal problem. But whatever I heard, it was really nice and thank wonderful you, information. thank you, I ma'am. just have one question. This Yeah. is regarding intermittent fasting. These days, Yes. we hear a lot about intermittent fasting, Yes. especially for Yes. those who want to lose weight. Yes. And मुझे इसमें यही पूछना है कि इसमें क्या क्या risks involved हैं और अगर I'm not talking sports persons, but for people like who are above the age of 45-50, is it safe to do that? और इसमें जो 14 or 16 hours का fasting होता Yes. है Yes. नहीं है कि जो level कहीं disturb हो जाते हैं. So just want your wise opinion on this, ma'am. यस मैम, एक्चुअली अगर आपने शायद सुना नहीं होगा, हमारे MTNAV ने पीछे कंडक्ट करे थे लेक्चर्स, ऑनलाइन हमारे चल रहे थे, उसमें मैंने फैट डाइट के ऊपर एक लेक्चर लिया था. फैट डाइट्स बेसिकली ये सारी एक्चुअली दे आर ऑल अंडर फैट डाइट्स. ये जो आपकी कीटो डाइट है, आपकी एटकिन डाइट है, देयर आर सो मेनी डाइट, इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आपकी विंडो है 8 to 16 आवर्स की विंडो बनती है, उसकी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है. एक्चुअली आई एम डेफिनेटली नॉट इन फेवर ऑफ दिस, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपसे यही बात करी थी कि आप देखिए जब ट्रेन चलती है, इंजन को जब हम फ्यूल नहीं देंगे तो ट्रेन कैसे चलेगी. हमारी बॉडी भी एक तरह की it has to has fuel in my body. जब तक आप फ्यूल नहीं देंगे आपकी बॉडी नहीं चलेगी. तो नॉर्मल इंटेक, रेगुलर इंटेक जब तक आप साथ में रखें, देखिए आपका जो इंटेक है, whatever is the intake, it should be equal to the output. जो भी आप खाते हैं आप उसको जलाते जाओ. लाइक आपकी बॉडी एक्टिविटीज में जो आपका यूज हो गया वो तो आपका यूज हो गया, बाकी जो आपका बच जाता है वो अंदर जाके फैट सेल्स में डेवलप हो जाता है. तो यू शुड नॉट परमिट दोस, मतलब फैट सेल्स में नहीं डेवलप होना चाहिए. सो यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस. जितना रोज आप एक, मैं तो सबको ये कहती हूँ कि जैसे ब्रश करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है. इफ यू डिवोट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आप अपने पूरे शेड्यूल में से निकालो विद एक्सरसाइज, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट. क्योंकि ये जो डाइट्स होती है ना, ये आपके, क्योंकि इसमें क्या है, आपका 16 आवर्स की फास्टिंग है, देन यू हैव टू 8 घंटे अपने खाना है. तो वो जो 16 आवर्स की आपने फास्टिंग करी, इट क्रिएट्स हैवक इन योर स्टमक, आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम, फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, ये आपके फिर ये चलते रहेंगे लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं. तो आई डेफिनेटली एडवाइज नॉट टू फॉलो दिस टाइप ऑफ डाइट. आप मेरे पास आइए, अगर आपका योग करते हुए मेरी डाइट दिए हुए आपका वेट नहीं कम होगा या किसी भी पेशेंट का नहीं कम होगा, तो आप हमारा नाम, इंस्टीट्यूट का नाम बताइए. Thanks a lot, ma'am. That's really wonderful. और ये जो आपने हमारा एक डाउट क्लियर करा, तो इससे काफी क्लैरिटी माइंड में आई. Thanks a lot once again. Yes, it's very, very, very good and informative. Any question regarding the diet pattern, anything else? Because now these days people are suffering from diabetes and high blood pressure. Any question regarding these? Because madam has a quality to explain everything. And ma'am, I have question regarding a small question is, what are the diet for the diabetic people and blood pressure, those who have blood pressure? You have any suggestion for that? हाँ, डायबिटिक पीपल, देखिए डायबिटिक पीपल को सबसे पहले तो हम ये एडवाइस करते हैं, एक तो जैसे मैंने यहाँ अपने इस लेक्चर में भी बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. डायबिटिक्स शुड ऑलवेज अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो सीधा अंदर जाके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपका बढ़ जाता है, आपका ग्लूकोज बढ़ जाती है. तो लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को डायबिटिक्स के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं, बंद नहीं करते हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर देंगे, देन पर्सन विल गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया. शुगर कम हो जाएगी, ग्लूकोज कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक में पेशेंट चला जाएगा. तो पेशेंट को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, और पूरे उसके पूरे दिन की डाइट में रखते हैं कि ब्रेकफास्ट में इतना लेना है, लंच में इतना लेना है, मतलब ताकि उसको पूरे दिन में कहीं पे भी उसको इतना एकदम से कम ना हो जाए, और उसकी इंसुलिन लेवल और अगर वो मेडिसिन ले रहा है उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को उसको मॉडिफाई किया जाता है कि कहाँ पे ज्यादा लेना है, कहाँ पे कम लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द
insulin dosage and depending upon the type of medicine he's amount of medicine he is taking. Then इसके साथ साथ पेशेंट को ये भी हिदायत दी जाती है कि अपने साथ में हमेशा कैंडी जरूर रखा करें, मीठी वाली कैंडी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डाइट भी फॉलो कर रहा है और साथ में दवाई भी खा रहा है और साथ में एक्सरसाइज भी हो रही है. समटाइम इट हैपेंस कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से डाउन चला जाता है, तो एट द सेम टाइम उसी वक्त अगर मुंह में कैंडीज रख ले तो वी कैन अवॉइड उस सिचुएशन से हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया में हो जाता है. तो इसलिए और बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो डायबिटिक डाइट है उसमें हाई फाइबर मेंटेन करके रखना होता है. फाइबर मींस रफेज, आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा रफेज लेना है और कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करना है. जितना आप फाइबर ज्यादा लेंगे वो हेल्प करता है ग्लूकोज को ब्लड में से निकालने का. इट अपटेक्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. फाइबर जो होता है, जो रफेज है बाकी उसको आपको मिल जाता है, सारी वेजिटेबल्स हैं जो फ्रूट्स हैं उनके स्किन से. जब भी आप सैलेड खाते हैं, जैसे अमरूद खाया, सेब खाया, खीरा खाया, यू टेक इट विद स्किन, यू आर टेकिंग मोर ऑफ रफेज. टेक इट इन द लंच टाइम, टेक इट इन द डिनर टाइम. तो जितना ज्यादा रफेज होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, तो वी कैन मेंटेन द डायबिटिक डाइट. एंड डायबिटीज यू नो इट्स अ लाइफ टाइम प्रॉब्लम. तो अब हम ये नहीं कर सकते ना कि उनको 1 महीने की डाइट देंगे तो बंदा जो है ना, जो पेशेंट है वो घबरा जाता है, क्योंकि वो इस तरह की डाइट होनी चाहिए ताकि वो लाइफ टाइम के लिए उसको अडॉप्ट कर सके. तो बेसिकली उसी की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को हम थोड़ा सा हेर फेर करते हुए हम उस पेशेंट के लिए उस तरह की डाइट प्लान करते हैं. Ma'am, we have one more question from Kabir. Kabir is BA program student of physical education. Kabir. Hello, ma'am. First of all, thank you so much for today for such pulchritude knowledge. Actually, thanks. I have a question, ma'am. That as you know, zinc is very essential for us. But, Yes. ma'am, I have read earlier that zinc cannot be stored in our body, but it is an essential for us. Then, how Yes. to maintain proper amount of zinc in our bodies? See, जो जिंक है दैट इज माइक्रो, आपका मिनरल्स है, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आई टोल्ड यू, ये आपकी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी चाहिए, बहुत थोड़ी चीजें होती हैं जो आपकी मात्रा इसके लिए बहुत कम चाहिए. जो मैक्रो है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो जिंक इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, राइट. तो आपको इसके लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी. इसके जो सोर्सेज है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिंक को आप स्टोर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है. तो ये आपके जितने जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, जैसे आप दलिया लेते हैं, देन फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, उसमें आपको मिल जाएगा. इवन इन केस ऑफ अनाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए जिंक की क्योंकि जनरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बहुत कम है. तो इफ यू आर टेकिंग प्रॉपर डाइट, आप अनाज ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, यू आर एक्चुअली टेकिंग जिंक इन अ प्रॉपर अमाउंट. तो उसको स्टोरेज, वो स्टोर तो होता ही नहीं है, बट यू हैव टू टेक इट ऑन द रेगुलर बेसिस. Ma'am, thank you. One Thank you so question. much, ma'am. Thank you. सर एक श्रुति मैम का एक क्वेश्चन और है. Yes, I take it. No problem. One question from Shruti, ma'am. Shruti Web. Yeah. Ma'am, you can ask the question. Okay. Yeah, ma'am, I just wanted to ask you कि जैसे थायराइड, हाइपोथायराइड सिचुएशन में is it permissible to take millets जैसे रागी, ज्वार, बाजरा? Should one shift from wheat to millets, or millets are not allowed in hypothyroidism? नहीं नहीं, हाइपोथायराइडिज्म में ये ले सकते हैं. हाइपोथायराइडिज्म में सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. Okay, so little millet and all they can be taken. They Yes, are safe. you can take, no problem in that. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. Any question, any query regarding health? Now these days, health is very, during pandemic, people are stuck in their houses. They are not physically active. They are survive on the basis of diet and daily activity. Any question regarding? Any question? This session is open for all of you. So there is no question. Yes. It was very informative session, and thank you, Madam Manjoot Kaur, for sparing your valuable time. Thank you, sir. Thank you so much. All enjoyed the session, have been able to understand the nutrition, diet, and it's important to the maintain healthy style, how sports performance related to the nutrition. Once again, thanks to on the behalf of college, PGDAV College, Department of Physical Education and Sports Sciences, and the sports committee of college. And thank you. And now I would like to invite
Ruchi Sharma, student of BA program, for the vote of thanks. Ruchi Sharma. Ruchi Sharma is there? Yes, sir. Yes. Yes, Ruchi. Good afternoon, one and all present in the webinar. I, Ruchi Sharma of BA program, would like to express, on the behalf of Department of Physical Education, would like to express the gratitude to College Principal Dr. R.K. Gupta sir for giving an opportunity to organize the webinar. I would like to express thanks to speakers, Dr. Tariq Nath sir and Mrs. Manjot ma'am for the stimulating sessions. Also thanks to college teaching staff, non-teaching staff, and the students for participation in the webinar. Personally, I would like to thank Dr. Pramod Sethi sir for giving me this opportunity to express vote of thanks to all participants. Thank you. Yes, thank you, Ruchi, for your good words. And I think our principal sir is busy in somewhere. Yesterday he called me, he's busy. When he's free, he come to the program. I think he was busy some. And then at last, I thank you once again, all of you, those who are participating in this webinar. And my personal behalf, I thanks to Dr. Tariq, Madam Manjot, teaching staff, non-teaching staff, and students, all the people, those who are joining this webinar. Thank you very much, all of you. Kunal also, Kunal is doing very good work. Kunal is a Thank you, sir. analysis. He is our, Thank you, sir. Sanjay, those who are, Sanjay means the Mahabharata. There is a Sanjay, those who are, seeing everything, every activity. Thank you very much, all of you. Thank you.